सो हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि कितने लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उनको खाली हाथ वापसी आना पड़ता है? This is Ayushmaan and in this video we are going to learn about how to speak in English fluently. I have already made 2 videos on this, but that is all about basics, and in this video you are going to learn about advanced. So are you ready to learn advanced English? So come on, let's begin the video. Okay, so in this video I am going to give you 3 tips and tricks which is very powerful tips. So you will have to follow. How much you will follow, that much you will improve yourself, that much you will be fluent, whatever you are trying to say. You will be able to communicate with anyone, whoever you want. Come on, let's start the video. Okay, so I have seen a lot of times that a lot of people goes for the interview, job interview, and then they got rejected for only on speaking English because they are not able to speak in English, and they want that the interviewer who is coming should speak in English, but the interviewer do not able to speak in English. They do not to understand what the other person is saying, and I don't want that more people face this type of problem. So that's why I'm making this video. Okay, so just let me tell you a thing that English is just a language. As we speak in Hindi, that same as it is English. Okay, English is just a language, and language is just a vehicle to transport your words. Come on, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज एक हमारी गाड़ी की तरह होती है जो कि हमारे वर्ड्स को ट्रैवल करने के अंदर हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. चलो, तो आज के बाद से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो कि हमारे वर्ड्स को सामने वाले तक पहुंचाती है, वर्ड्स को. चाहे आप हिंदी बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके लिए, आपके अंदर. कुछ भी आप बोल रहे हो, any type of language you are speaking, you should have the confidence. Then you will be able to speak fluently or clearly, because you should have the clear thought of mindset. Because with the help of your confidence, when you will have the confidence, you will be able to speak any type of language or any type of things. That's why I tell you in every video that increase your confidence. It's okay. In this video I'm going to tell you that how you can also improve the confidence. The tips and tricks I'm going to give you in this video that are very powerful, if you don't apply that on yourself, if you don't implement that in your life, then I'm sorry, then you are wasting your time. You may leave. But if you are really ready to improve your English, to improve yourself, then you will have to implement that all, whatever you are going to learn in this video. So come on. Tip number 1 is reading. Start reading. Reading is an art, not the simple how you do. Reading is an art. You have to read any type of, you are reading newspaper, you are reading the books, you are reading any type of magazines or whatever you want to read, what you like to read, you have to read that every day. And it is also an art that how you have to read. I'm just going to tell you that how you have to read. You have to read slowly and loudly. Like slowly and loudly. How I am speaking right here in front of you, in this way you are to read. What will happen from this? It will also increase your reading skills, which is very important in the school, college, or day-to-day life. Wherever you go, you will have to read. If you are going somewhere with the help of your vehicle, you will have to read the boards, that whatever is written on that board, and then you will pass away from there. Oh, it's okay. So reading skills is also must, and it is very helpful for our improving English. I have already tried and tested all these steps which I'm going to give you in this video. So come on, let me show you that how you have to read. So here I have the book, and I'm going to read it in front of you. Any random page I have opened, and I'm going to read in front of you. Okay, now assume me how I am going to read it. But the truth is that wealth is what you don't see. Wealth is the nice cars not purchased, the diamonds not bought, the watches not worn, the clothes foregone, and the first class upgrade declined. Okay, it was the book which I am reading, right? It is the book which I have read. The Psychology of Money, if you want to read. It is all about financial education. If you want to read, so you can read it. Okay, so have you assumed that I have read it simply?
simple as you can. You have to read it slowly so that your words should be clear, and loudly so that you can hear your words by yourself. Your voice should come to your ear by yourself. आपको ऐसा बोलना है कि आपके जो मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं, आपके जो मुंह से वॉइस निकल रही है, वो वॉइस का वॉल्यूम इतना हाई होना चाहिए कि वो आपके ईयर को सुनाई दे. कम ऑन, ईयर को सुनाई दे. ईयर को सुनाई देगा तो वो आपके ब्रेन में जाएगा, एंड देन इट विल गो टू द ब्रेन, देन इट विल इम्पैक्ट. फिर आपके ईयर्स को सुनने की हैबिट होगी, सुन सकेंगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है. कम ऑन, पकड़ना सीख जाएंगे आपके ब्रेन, किस तरह से वर्ड्स को पकड़ना है और क्या समझना है उससे. क्या समझ रहे हो, आपको क्या समझ रहे हो, वो सब आपको समझ आएगा. और अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ आता, सामने वाला जब आपसे बात करेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि आपके ईयर्स को हैबिट है. बिकॉज योर ईयर्स हैव द हैबिट टू कैच द वर्ड्स, टू रीड द वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. कम ऑन, टू रीड द वर्ड्स, अंडरस्टैंड, कैच. आप क्योंकि कैच करने का काम तो हमारे ईयर करते हैं. जब हम कैच नहीं कर पाएंगे तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे. कम ऑन, इफ वी नॉट बी एबल टू कैच द वर्ड्स देन हाउ विल वी रिएक्ट. सो इसलिए हमारे कानों को आवाज सुनाई देनी है ताकि हम रिएक्ट कर सकें, बढ़िया तरीके से सामने वाले को समझ सकें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन. दैट इफ अदर पर्सन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन वी विल बी ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वट एवर द फ्रंट पर्सन इज सेइंग टू यू. इट्स ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन. द सेकंड स्टेप इज, it is the practice which I'm going to give you. What you have to do, you are in your room and you have to look around yourself. You have to look around in your room. Look, whatever the things we have, whatever the things you have, whatever the things in your room are available, you have to just look them, and then you have to speak 2 to 3 lines on that every day. You have to just take 10 things. You have to just look at 10 things and then you have to speak 2 to 3 lines every day by yourself. Come on, क्या कह रहा हूँ मैं, हिंदी में समझाता हूँ एक बार. आपको अपने घर के अंदर देखना, जो भी आपको चीज दिख रही है उसके ऊपर आपको कम से कम 2 से 3 लाइन बोलनी है. और हर रोज आपको कम से कम 10 चीजें अपने घर से उठानी है. घर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं. कम ऑन, ढूंढो उन सब चीजों को. ढूंढो नहीं मतलब आपको सामने ही दिख जाएंगी यार. जो चीजें आपके सामने दिख रही हैं उन सबको निकालो. पीछे बैकग्राउंड है, सो आई कैन से इट इज द बैकग्राउंड ऑफ ब्लू कलर्स प्रिंटेड विद फ्लावर्स. इन दिस वे यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स आपको बोलनी है हर किसी टॉपिक के ऊपर. लाइक मेरे पीछे यहाँ पे ट्राइपॉड रखा है, सो हियर इज अ ट्राइपॉड इन फ्रंट ऑफ मी. इट इज ऑफ ब्लैक कलर एंड इट इज पोर्टेबल. आई कैन यूज इट anywhere wherever I want to lift it, I can lift. Wherever I want to keep it, I can keep. इस तरह से आपको बोलनी है कम से कम 2 से 3 लाइनें. हर जब आप बोलना स्टार्ट कर देंगे every day, then it will be habitual to you. Your tongue automatically leave the words, then you will be able to speak with anyone. आप किसी से भी बोलना स्टार्ट कर सकेंगे, आप किसी से भी बोल पाओगे, बिकॉज आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी. आपको एवरीडे अपने घर के अंदर कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकालो. 1 घंटे के अंदर किसी भी 10 चीजें उठा लो, कोई भी 10 चीजें अपने घर में से ले लो, पिकअप कर लो, एक एक करके बोलते चलो सबके बारे में. इससे आपकी टंग को हैबिट हो जाएगी और फिर अपने आप आपके वर्ड्स आपके माउथ से निकलते रहेंगे. कम ऑन, आप बोलने से मत डरो. अ लॉट ऑफ पीपल फियर फॉर स्पीकिंग because they fear that other person will make joke, other person will laugh on them. Listen, everyone will laugh at you if you don't do anything. If you will fail, then everyone will laugh at you. But if you got passed, then everyone will forget that. You will also forget that. But the results will you get, that is the main thing. You have to get the results, not you have to get the laughing of others. दूसरे हंस रहे हैं, हंसने दो. मजाक बना रहे हैं, बनाने दो. इट्स ओके, डजंट मैटर. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ. बिकॉज जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, तब वो मजाक नहीं बनाएंगे आपका, तब वो आपके बारे में बातें करना स्टार्ट कर देंगे. बस थर्ड टिप है मिररिंग. स्टार्ट मिररिंग. नाउ व्हाट इज मिररिंग? मिररिंग इज व्हाट दैट you take the mirror in front of you and then you talk with yourself. Come on, wait. बहुत से लोग करते हैं, and I have already tried and tested this. Now look, here is the wall in front of me and I am to keep a mirror here and then I am to talk to myself. Then I am to talk with myself. मेरे को अपने आप से बात करनी है यहाँ पर देख के खुद से. जब मैं अपने आप से बात करूंगा उससे क्या होगा ना कि आपको ये नहीं सोचना कि आप खुद से बात कर रहे हो. You have to think that you are talking to someone else. आप खुद से नहीं बात कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो. एंड देन इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड यू विल बी एबल टू स्पीक. आप बोलना सीखोगे, आप ज़्यादा ज़्यादा वर्ड्स कैच करना सीखोगे, आप ज़्यादा आपका माइंड ज़्यादा चीज़ें कैप्चर करेगा. यू विल बी एबल टू स्पीक अ लॉट. यू विल बी एबल टू कैच मोर वर्ड्स ऑटोमेटिकली एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर your words.
कम ऑन, चलो ये तो समझ लिया, मिरर रखना है, उसके बाद बात करनी है। अब क्या करना है इसके अंदर, कैसे क्या बात करें भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बात क्या करें। लिसन, बात क्या करो, वट एवर हैपेंड विद यू in the day and whatever you are going to do in the day, what happened good, what happened bad, what is your plan, how is your studies going on, introduce yourself, क्योंकि आपको अपने आप में ही बात करनी है, क्योंकि आप अपने आप में ही बात करोगे, आपको वहां पर कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, कोई आपके ऊपर जोक बनाने वाला नहीं है, कोई भी आपका मजाक उड़ाने वाला नहीं है। आप हो और सिर्फ आप हो, क्योंकि आप हो और सामने मिरर में भी आप हो। व्हेन यू विल स्टार्ट टॉकिंग विद योरसेल्फ देन यू विल बी एबल टू स्पीक विद एनीवन। एक बार आपने खुद को फेस कर लिया देन आप पूरी दुनिया को फेस कर सकते हो। ओके, सो अभी आप इनको ट्राई करो, बिकॉज अगर आपने इनको ट्राई करा देन यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स इन लेस टाइम, बिकॉज एवरीवन वांट्स द जंप। हम अब ये 21st सेंचुरी आ चुकी है, इस सेंचुरी के अंदर हम ये नहीं चाहते कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर कि हम 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से जाएं। नहीं, मैं आपको ये वीडियो इसलिए बनाऊं ताकि आप सीधा 1 to 5th पे जंप मारो, बिकॉज एवरीवन वांट बूस्ट। That's why I'm making this video, so that boost up yourself, come on, boost up yourself। आज के बाद आप डरेंगे नहीं किसी से बात करने के लिए। अगर आप मेरी पुरानी जो वीडियोस देखना चाहते हो जो कि मैंने पहले बनाई है, जो कि बेसिक्स है, if you want to learn about that then I have given the link in the I button, you can watch, click on there and you can watch that। Okay, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और आगे आप किस किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट करके बताओ कि आगे आप किस किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो। एंड अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर एंड इम्प्रूव योरसेल्फ।